Hello everyone. Today we are going to learn about electric resistance. Now what do you understand by electric resistance? The property of a conductor by virtue of which it opposes the flow of electrons is called as its resistance. मतलब कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन को आगे फ्लो होने नहीं देता उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस. Suppose I have a conductor through which my current is flowing in the forward direction. If my current is flowing in the forward direction, I am going to say I have my resistance, that is R, and the potential which is applied across the conductor is V. तो हम लोगों ने एक कंडक्टर लिया जिसमें से करंट फ्लो किया I, उसका रेजिस्टेंस ले लिया R और उसका पोटेंशियल ले लिया V. So we have to study about our electric resistance R. The basic formula of our electric resistance R is R is equal to V upon I. Now R is equal to V upon I, this formula we got from our Ohm's law. Because if you remember, according to Ohm's law, V is equal to I into R, that is R is equal to V upon I. The second formula of our resistance tells us R is equal to ML upon NE square tau into A. Now remember, R is equal to ML upon NE square into tau into A. Here M stands for mass of an electron. L stands for length of a conductor. Your N stands for volume density of an electron. Your E stands for charge of an electron. Your tau stands for your relaxation time. And your A stands for your area. Now after this, the third formula of our resistance is R is equal to rho L upon A. Now here rho is our specific resistance or resistivity. L again is length of a conductor. A is again area of a conductor. Now after learning the formula of our resistance, let us understand the unit of our resistance. Now if you remember, if we classify our units will be classified into two types, that is SI system and CGS system. In SI system, the unit of our resistance is volt per ampere. Volt per ampere क्यों आया? Because R is equal to V upon I. V मतलब वोल्टेज जिसका यूनिट है वोल्ट, I मतलब करंट जिसका यूनिट है that is ampere. Volt per ampere in all is called as ohms. So SI unit of our resistance is ohm, whereas CGS unit of our resistance is stat ohm. So remember there are two units, one is SI, other is CGS. SI में बोलते हैं हम लोग ohm, CGS में हम लोग बोलते हैं that is stat ohm. Now after learning the units, let us move to our dimension. The basic dimension of our resistance is M raised to 1, L raised to 2, T raised to minus 3, A raised to minus 2. So this becomes all about our resistance. Now let us understand what do we actually mean by resistance. What is the source of resistance? Now to understand the source of resistance, let me consider a conductor. मैंने एक conductor consider किया. अभी हम लोग को पता है each and everything is made up of atom. So as you can see, even this conductor is made up of atom. Now these atoms are vibrating at their own position. मतलब ये thermal vibration रहता है. Thermal vibration का मतलब क्या? Surrounding में जो heat है, conductor का जो heat है, उसके वजह से क्या हो रहा है? हम लोग का atom अपने जगह पे वाइब्रेट कर रहा है. अभी एटम अपने जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, हम लोग के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्टर से फ्लो करना है. इलेक्ट्रॉन्स अगर कंडक्टर से फ्लो करना स्टार्ट होगा, सो व्हाट यू कैन सी, हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में कौन आता है? हम लोग के एटम्स. एटम अपनी जगह पे क्या हो रहे हैं? वाइब्रेट हो रहे हैं. अभी ये इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में आ गया, इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से रोक रहा है. किसी भी चीज को आगे जाने से रोक रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेजिस्टेंस. इसलिए हम लोग ने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में बोल दिया था it is the property of a conductor. Why it is property of a conductor? Because atoms भी किसके हैं? हम लोग के कंडक्टर की वजह से है. अभी so you understood the basic source of our resistance is due to thermal vibration of our atoms. Now let us elaborate our resistance more. So learning more about resistance, I am saying I am having a cell. एक सेल है जिसको मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया. अभी वायर में कनेक्ट कर रहा हूं, आगे लगा रहा हूं मैं एक बल्ब. अगर आगे मैंने लगा दिया एक बल्ब और एक मैंने वायर लिया, उसके आगे लगा दिया मैंने दूसरा बल्ब.
फिर वायर लिया, इसको कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से और इधर मेरा पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। इधर मेरा सर्किट कंप्लीट हुआ। अभी मैं क्या करूंगा, जैसे ही करंट पास करूंगा बल्ब ग्लो होना स्टार्ट होगा। अभी ये हो गया अपना पहला कंडीशन। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, बल्ब एक के बाद एक कनेक्टेड है, मतलब हम लोग बोलेंगे टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अभी इसी के अलावा सीरीज के साथ कौन सा आता है हम लोग का, पैरेलल। अभी अगर हम लोग पैरेलल का ले लिया, पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक के नीचे एक बल्ब कनेक्ट किया, करंट फ्लो होने लग गया, ये बोलेंगे टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब पहले हमने क्या किया, बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, उसके बाद हमने क्या किया, बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अभी तुम लोग दोनों में ग्लो देखोगे बल्ब का, पहले इसमें क्या है, अलग ग्लो है, दूसरे इसमें क्या है, अलग ग्लो है। इसका मतलब क्या, आवर रेजिस्टेंस वेरीज इन सीरीज कनेक्शन एज वेल एज इन आवर पैरेलल कनेक्शन। मींस व्हेन टू बल्ब्स आर connected in series we get more resistance, whereas when two bulbs are connected in parallel we get less resistance. This is according to our basic formula, that is R is equal to R1 plus R2 in series, and our formula 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 in parallel. This is all about our resistance in our bulb. Now let us elaborate our resistance. Let us see the factors which is affecting our resistance. Now the factors which are affecting our resistance will list out one factors which affect our resistance. Now the first factor is the nature of the material of wire. Now what do you understand by the nature of material of wire? Now each and every material has different nature. कोई कंडक्टर है, कोई इंसुलेटर है। अगर कंडक्टर भी है तो किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसी का रेजिस्टेंस कम है। Now let me say the first wire which I have is a copper wire. The second wire which I have is a tungsten wire. मैंने पहला वायर ले लिया कॉपर का, दूसरा वायर ले लिया टंगस्टन का, दोनों में लगा दिया मैंने बल्ब। इसका मतलब क्या, अगर दोनों में तुम लोग ग्लो देखोगे बल्ब का, सो व्हाट वी सी, दोनों में ग्लो क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब क्या, एज वी चेंज द मटेरियल ऑफ आवर वायर आवर रेजिस्टेंस आल्सो चेंजेस। सो द फर्स्ट थिंग व्हिच अफेक्ट्स आवर रेजिस्टेंस इज द मटेरियल ऑफ द वायर। द सेकंड थिंग which is affecting our resistance is the length of the wire. अभी length of the wire का मतलब क्या, that is R is directly proportional to L. From where we got this, we have written that R is equal to rho L upon A. मतलब R is directly proportional to L. Means what? If I am going to take a conductor, इसमें मेरा length छोटा है, दूसरा कंडक्टर में मेरा length ज्यादा है। पहले कंडक्टर में if you are going to see my resistance is 60 ohms, दूसरे कंडक्टर में if you are going to see my resistance is 98 ohms. इसका मतलब क्या, जैसे जैसे हम लोग लेंथ इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे हम लोग का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होते जाता है। मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर लेंथ। Now let us take the third factor. Our third factor is the temperature of the conductor. This is the most important factor on which our resistance depend. अभी temperature of the conductor मतलब R is directly proportional to temperature. एक कंडक्टर का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा साथ साथ में उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। Let us take an example. हम लोग ने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, उसमें से we are flowing a current. अभी ऊपर हम लोग ने ले लिया रेजिस्टेंस का वैल्यू, नीचे हम लोग ले लिया टेम्परेचर का वैल्यू। अभी पहले अगर बोलेंगे हम लोग का टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, सो आवर रेजिस्टेंस इज 4 ओम। मतलब क्या, 4 डिग्री पे अपना रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम। अभी हम अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस का वैल्यू एज यू कैन सी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो और रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो और रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे हम लोग अपना टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे अपना रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होते जाएगा। Remember, this is in the case of our conductors. कंडक्टर में जैसे जैसे हम लोग अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे अपना रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। मींस R is directly proportional to temperature. Now let us learn the other factor on which our resistance depend. The other factor is the area. Now R is inversely proportional to area. If you remember, R is equal to rho L upon A. Area कहाँ आता था, डिनोमिनेटर में, मतलब R is inversely proportional to area. इसका मतलब क्या, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा अपना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, जैसे जैसे एरिया कम होगा अपना रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब क्या, पहले हम लोगों ने एरिया ले लिया, अगर मैंने बोल दिया ये 6 mm का अपना डायमीटर का वायर है, दूसरा हम लोगों ने वायर ले लिया और जिसका हम लोग का डायमीटर है दैट इज 25 mm। मतलब क्या, जिसका एरिया कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। दिस इज ऑल अबाउट आवर रेजिस्टेंस। थैंक यू।